हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स सीबीएसई फटाफट रेडी जाओ। आज हम डिस्कस करिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रे गोटे घंटा भीतर मैक्सिमम 30-40 मिनिट बा 45 मिनिट भीतर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देबे हला। तो स्टार्टिंग में पढ़िया जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रे। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम रे जति दीटा पॉइंट अछि, ओनली 2 पॉइंट्स देयर। ए 2 पॉइंट्स अछि तो पॉइंट रा डिस्टेंस केते, तो डिस्टेंस फाइंड करबा में ओरा डिस्टेंस फार्मूला क्रिएट करियो, राइट। So it is a point. Suppose this is a point and this is a point. So in this point this is A and this is B. Okay. चेष्टा करछि पूरा चैप्टर कंप्लीट करा पे। तमे तो ऑलरेडी वर्षा पढ़ि दिछो, चैप्टर विषय जानि थो, तो आउट रिवाइज करते पूरा पढ़ लियो। तो ये है डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करिया, राइट। डिस्टेंस फॉर्मूला फर्स्ट पढ़ा दिस कोऑर्डिनेट ला x और y बा x1 y1, राइट। सेकंड ला कोन x2 y2, x2 y2। A रो कोऑर्डिनेट ला x1 y1, B रो कोऑर्डिनेट x2 y2। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AB। तो AB रो डिस्टेंस के मार करबा, ओके। ये जो है एको में प्रूफ करा जाउछे हला, एको में प्रूफ करे फटाफट प्रूफ कर देखो। जति ए डिस्टेंस ता और एटा जॉइन करबो ना, तो ए दिस वन इज इक्वल टू x1 एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x2। बुझियो छे। और हाइट अनुसार ए पूरा कंप्लीटली दिस हाइट इज इक्वल टू y2 एंड दिस हाइट इज इक्वल टू y1। क्लियर। तो हमें कोई दे जॉइन करे पुणी है ए लाइन देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री। सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अस दिस पॉइंट इज C, राइट। इन ABC triangle, that AB AC square plus BC square, the AC square plus BC square plus square root. So AC square plus BC square square root. What is AC? AC is equal to बोलो AC is equal to AC. So this is AC. 1 second. AC is equal to what? Here you can write here AC is equal to x2 minus x1. Clear? Similarly, BC is equal to y2 minus y1. Okay? Since this is x2 minus x1, this is y2 minus y1. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square the square root. This is AB. Finished? So this is your what? This is your distance formula. One example I am giving. Suppose A is 3, 4, a coordinate. B is equal to this example, right? This is example. So AB, A 3, 4. This is 5, 6. So my question is find AB. So AB how much? Okay. So this is x1 y1, x2 y2. Now AB is equal to formula. Formula put karo. So this is your x2. X2 means what? This is 5 minus 3 whole square plus 6 minus 4 whole square root. Okay, no confusion. One important point I will tell you. x2 minus x1 whole square is equal to x1 minus x2 whole square. x1 minus x2 whole square लिखा जा, x2 minus x1 whole square लिखा से है। a minus b whole square जितनी की, b minus l square whole square जितनी की। कारण square का positive हो कि negative हो always same. Remember this point, right? So this is your law. 5 minus 3 whole square लिखा जा, 3 minus 5 whole square लिखा से है। 4 minus 6 whole square लिखा जा, 6 minus 4 whole square लिखा से है। That is equal to now 5 minus 3, that is 2 square plus here 2 square, finally 4 plus 4 square root, that is equal to root 8, that is equal to 2 root 2. Okay, clear? This is equal to 2 root 2. So this is your distance formula. Sorry gala distance formula buझी गला। आगे बढ़े जदि A is a point, B is a point, and coordinate of A is equal to x1 y1, coordinate of B is equal to x2 y2, then distance between A B is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square root. Okay? और x2 minus x1 वाले की वजह चाहूँ जो उल्टी लिखी हुई चोरी हो गया, because x1 minus x2 whole square is equal to x2 minus x1 whole square. Clear? ये है तुम्हारा इस वाला। Next we discuss section formula. देखो आमे डिस्कस कर सले कोन करले डिस्टेंस फॉर्मूला सही गला। तो मु एके आउटसाइड जस्ट रिवाइज में कोई यूज थी। फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ला ना AB is equal to what?
x2 minus x1 ର whole square plus y2 minus y1 ର whole square ର square root. Clear? This is your distance formula. So based on that, one point I am getting here. Suppose this is your A and this is your B. This is your x1 y1. This is your x2 y2. Okay, and there is a point C. There is a point C which divides x and y. Now already the distance formula. Look at the board. This is your AB distance. AB distance already calculated. Now we have to calculate what is the value of x and y when C divides AB. जदि AB को C divide करछि और C रो कोऑर्डिनेट x और y अछि ताहले C x y रो वैल्यू केते हो एटा पॉइंट आउट कथा होइला कोन ना जदि इफ एटा वाला इफ है जदि C टा को x मिड पॉइंट डिवाइड करछि और x और y रो वैल्यू केते हो जदि एटा A और B आउट कथा होइला कोन आमे सिखेबा ओटे ट्रायंगल रे जदि तीनटा मीडियन the three medians are there. Okay, this is your A, this is your B, this is your C and D, this is E and this is F. So in triangle ABE, if EC is the median, if EC is the median, AD is the median and BCF is the median, the three medians intersect each other at a point. That point is known as centroid. That point is known as centroid. That point is known as centroid, right? तो centroid रा कोऑर्डिनेट कहते हैं, यार रा कोऑर्डिनेट कहते हैं, मिड पॉइंट रा कोऑर्डिनेट कहते हैं, centroid रा कोऑर्डिनेट कहते हैं, और सेक्शन ये सब तो पठा में गोटे डिस्कस करिवा. तो फर्स्ट फार्मूला वाला नंबर 1 डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला क्लियर. डिस्टेंस फार्मूला बोले बुझिला. एबे हम जीवा के पढ़ के क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज इक्वल टू सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला. तो सेक्शन फार्मूला रे फटाफट बुझो. सेक्शन फार्मूला रे कोन करबा ना सेक्शन फार्मूला रे मु कोन गोटे संख्या रे आपटे बुझी एठो पिक्चर करछि. एठो लाइन अछि. दिस इज अ लाइन, दिस इज योर A, दिस इज योर B and this point is C. Okay, so this point line joining, again same procedure. This is joining. Now proof. Okay, now this is your 90 degree and this is your 90 degree. Okay, the two triangles are there and this is x2 y2 x y x1 y1 x1 y1 and x y and x2 y2. So this distance is equal to x1, right? This distance is equal to x2. This distance is equal to x3. Clear? Now triangle ABP and Q is very important. Okay, now understand. APC is similar to CQB. Yes or no? Because right angle 90 and this angle is equal to this angle by AA similarity. By AA similarity. आ मु डिटेल्स बुझोने सिमिलरिटी विषय आगर बहुत आगर जानिछ. सिमिलरिटी केमिति ट्रायंगल प्रूव होय से जानिछ. से गोटे पार्ट निकले मु AA सिमिलरिटी ट्रायंगल ला कन्वर्ट हे गेला. ऐसा सिमिलर हे गेला, राइट? तो सिमिलर अपरे सो AP by CQ, PC by QB, AC by CB. Clear? AC by CB, PC by QB, then AP by CQ. तो AP रा वैल्यू कहते हैं AP x2 minus x1, CQ x3 minus x2. Yes or no? x3 minus x2 CQ. This one what? CQ means suppose this is your put right L M N. तो CQ means LMN or LM minus LM. Yes or no? Similarly PC. What is PC?
PC full is equal to this equal this distance full is how much? Y2. This one is Y and this one is Y1. So PC मतलब Y2 minus Y and this is AP. This is X. This is not X2. Sorry, this is not X2. This is X. We have taken X. So X minus this one is X. This is your X minus X1. Similarly, this one is Y2 minus Y divided by Y2. This is Y2 minus Y. Then QB. What is QB? QB is PC wrong. This is Y minus Y1. Yes, Y minus Y1. Correct? PC. Look at here. PC. Which was a PC? PC is equal to CM minus PM. PM is Y. So this is equal to this PM. PM means Y1. So Y minus Y1 exactly X minus X1 Y minus Y1 divided by QB. Pura QB is equal to Y2. Okay, this is not Y3. This is equal to also X2. This is X2 divided by X2. It will be easy. X2 and X2 minus X. Clear? Similarly, Y2 minus Y. Okay. So QB is equal to Y2 minus Y. SC. What is SC? SC we have not taken anything. Okay. Keep it as usual. CP. If AC is to BC. If SC is to BC, M is to N. If SC is to BC, M is to N. Okay. Understood? So M is to N. This part is M. This part is N. Clear? M is to N. Now can I get that you will do X minus X1 by X2 minus X. Okay. So that is equal to M by N and Y minus Y1 by Y2 minus Y equal to M by N. Understood? Because this AC by this one by this one is equal to M by N. This also M by N. This equal to this. This equal to this. Okay. So from this expression, now we calculate here X is equal to X minus X1 into N is equal to X2 minus X into M. So X NX minus NX1 is equal to MX2 minus MX. Clear? Change. NX plus MX. MX2 minus plus NX1. So X is taken as common. Then M plus N is equal to MX2 plus NX1. Finally, what you got? X is equal to MX2 plus NX1, right? So divided by M plus N. Understood? तो x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n. तो ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट. This x कोऑर्डिनेट is equal to what? mx2 plus nx1 divided by m plus n. Y coordinate similarly exactly y coordinate will get what? Will get my2 plus ny1 divided by m plus n. बुझेला? तो तमे एटाला सेक्शन हमला पूरा कंप्लीटली डिस्कशन पूरा देली प्रूफ कर देली केम दिहला दिला ट्रायंगल सिमिलर करिवो रेशियो पकेइवो तो फाइनली तमे एम स्टेप ने सेपरेट नबो तो फाइनली x और y रा कोऑर्डिनेट क्लियरली तमे पाइ जिवो. ओके, ये पूरा सेकंड वीडियोस राइट. तो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस हमें एक पार्ट सरी गला एबे तारा वेरी शॉर्टली देबी मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंटर फार्मूला. ओके,
तो देखो तो बोर्ड ठीक दिखाऊँ देखो हाँ बोर्ड तो ठीक गला कंप्लीट क्लियर है एबे हम पढ़िया कोन सेक्शन फार्मूला रे मन देख शुरू में गोटे इंपोर्टेंट कथा कहूँ प्राय पिला माने के ध्यान दियंतु नहीं टीचर में भी के एक्सप्लेन करते के नहीं तो सेक्शन फार्मूला रो दुटा एप्लीकेशन अछि एक्चुअली जोड़े फार्मूला डिजिटल फार्मूला सेक्शन फार्मूला तो सेक्शन फार्मूला रो दुटा एप्लीकेशन अछि कौन कौन देखो मो बुझो तुम सेक्शन फार्मूला को एप्लीकेशन एठी मु लिखि दछि सेपरेट डिस्कशन करी राइट सेक्शन फार्मूला सेक्शन फार्मूला दुटा एप्लीकेशन दुटा यूज सेक्शन फार्मूला यूज करिकी करिवो आउ सेटा बहिरो जदि सिलेबस कटि जाइछि तम कहबो हम सिलेबस नाही बेटा सिलेबस रे नाही करे चलिबो नाही काहे कि ना एटा सेक्शन फार्मूला रो ही गोटे एप्लीकेशन तो सेतबेले तम को करिवो जे सेक्शन फार्मूला हमर हम जानिछु किंतु सेटा जाननु देख केम सेक्शन फार्मूला यूज करि जाननु तो दिस इज इक्वल टू मिड पॉइंट फार्मूला midpoint formula okay this is equal to what section out asla on this formula kali centroid okay centroid right centroid formula okay ये तमरो दीटा फार्मूला शिखे पड़िबो हला ध्यान देखि सुनो खाता बडा भइला बसी के बे सागे सागे लिखो एबे ही लिखो ताले पुणी आते भूली जिवो रेडी स्टार्ट सेक्शन वाला मिडपॉइंट वाला कोन शॉर्टकट कहबी एक्सप्लेन करे करबी मिडपॉइंट वाला कोन ना जदी ओरे लाइन टे अछि एठी मिडपॉइंट अछि p एठी a एठी b एठी x1 y1 x2 y2 बुझलो दैट इज इक्वल टू x दिस इज इक्वल टू y ता माने p is equal to vp और बुझलो जदी एपिटा vp संगे इक्वल थिबो p टा मिडपॉइंट हेतिबो ताले कोन ना दिस साइड इक्वल टू दिस साइड ये सब आमे टी मिडपॉइंट मालूम नाही आमे कोन करबा आमे सेक्शन फार्मूला यूज करबा लेट अस स्टार्ट सेक्शन फार्मूला कोन कहला सेक्शन फार्मूला कोन ना x is equal to mx2 plus next one divided by m plus n ये सब नो जदी सेक्शन फार्मूला एटा कहला तो एटी m केते एटी m केते ना m is equal to n okay let ap is equal to n bp is equal to bp is equal to n this is m this is n here m is equal to n okay ध्यान दे सुनछो तो मैंने घरे गाला दे बसलो तो हला गाला बसले किछ बेटा बनी ध्यान याद दियो बुझलो ध्यान याद ले पाठटा हो ताले साडे अलग कथा हो तो ओके गेम फेम खेलबो मोबाइल रेडी स्टार्ट करो आधा ध्यान दे सुनो x is equal to mx2 plus n divided by m plus n then m बटे केते रे m केते देख देख खाता देख केते m केते m केते that is equal to ap that m ap no so direct m is like लिखो m mx2 plus n माने n मानता है ना ऊपर लिख लिए mx1 divided by m plus m that is equal to m taken as common x2 plus x1 divided by 2m 2m mm खत्म अब क्या हो गया कुछ तो हुआ ना हो गया ना ये वाला अरे भाई ये वाला फॉर्मूला कहां से आ गया किछ बुझी परछो ये वाला फॉर्मूला ये मिडपॉइंट फॉर्मूला ए बी line segment x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 midpoint is x and y then x value is equal to x1 plus x2 y2 and y is equal to y1 plus y2 y2 clear similarly y is equal to क्या होगा y is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n now that is equal to m y2 m y1 by m plus m m is taken as common okay so that is equal to y2 plus y1 divided by 2m mm cancel finally y2 minus y1 y2 plus y1 divided by 2 okay so x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 this is the mid coordinate of the midpoint
or two line segments. Clear? This is in place of m, put m. In place of n, also put m. Because m and n are equal. Okay? तो देखा तमे एठी जमाने में एठी पढो तुमको एठी ऑफलाइन मो क्लास पिला माने बसचंती एठी पिला माने ऑफलाइन पढुचंती प्लस ऑनलाइन पढुचंती तो समस्त एठी तमे भी देखो एठी पढौची पिला माने बहुत सीरियसली लिखुचंती तमे भी घर से लिखो हला तमे फ्री रे पढुछ माने पैसा दउचंती बुझि परलो तो दिस इज चांस फॉर यू चला लेक्चर देन अरे बस देखा जो बोर्ड लिखा ठीक से समझ दो ओके देखा पहले हमने तुमको 80 कही ना रेडी लेके चला 80 सेक्शन फार्मूला का ଗୋଟେ एप्लीकेशन दिस इज मिड पॉइंट फार्मूला तो स्पेशली मिड पॉइंट फार्मूला वाली अलग କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ସେକ୍शन फार्मूला पार्ट तो सिलेबस को कटले भी हमरा से भलिया क्वेश्चन पड़िया चांसेस अछि बिकॉज़ दिस सेक्शन फार्मूला इज इन योर सिलेबस तो सेक्शन फार्मूला जब सिलेबस अछि ताले सेक्शन फार्मूला एप्लीकेशन ताको लगे हम जा यूज करियो तो एटा देखो होची सेंट्रोइड राइट देखो सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला दिजणा को मिसी की सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला दीटा को यूज है की सेंट्रोइड यूज होची केमती लुक एट हियर दिस इज योर फॉर्म triangle yes or no this is midpoint this is your midpoint right this is A this is B this is C and this is x1 y1 this is x2 y2 you know there is a median this is your midpoint suppose this is D and this is E and this is suppose B so by midpoint formula by midpoint formula so this coordinate suppose this is your x3 y3 x1 y1 x2 y2 x3 y3 now what is the coordinate this one this plus this by 2 this plus this by 2 same okay mano hoga that is equal to x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2 okay similarly what is the coordinate this one bolo x1 plus x2 by 2 x y1 plus y2 by 2 clear yes or no स्टार्ट अरे ये गला ए जो पार्ट लिखली ना ए पार्ट क्लियर एटा कोन मिड पॉइंट फार्मूला पड़ला मिड पॉइंट फार्मूला रे भी सेक्शन फार्मूला अछि ता माने एटा क्लियर अच्छा यू नो इन ए मीडियन व्हेन द टू मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर जदी गोटे ट्रायंगल रे दीटा मीडियन इंटरसेक्ट करिवे से पॉइंट को कोन कहंती सेंट्रोइड and you know the centroid divides a median in 2:1 ratio the centroid divides a median into 2:1 ratio the from the vertex that is two part from the side that is one part that is clear okay मोर ए median special ऊपर ଗୋଟେ special वीडियो करछि देखि दो सर्च करबो पाइबो median special median ऊपर तो एटा two part एटा one part clear this is your centroid that is suppose this is O okay and this is a two part this is one part this part like this point again I am doing here this is O part this part is equal to x1 y1 this part is equal to x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2 clear this part is equal to this part is equal to 2 part this is one part okay this is equal to A part, this is 2 part, this is 1 part. Okay, this is equal to suppose this is equal to B. So 2 part, 1 part, coordinate is given, clear? So just observe, this is your A, D, did not B, this is sorry, this is D. Okay, this is D. From AD, who is the centroid? Centroid divides the median into 2:1 ratio, and from the vertex two part, from the opposite side, that is
one part. Okay, now put here section formula. If this is equal to x and this is equal to y, what is the coordinate of x? X is equal to mx2 plus nx1. So the formula, this is your m part, this is your n part. Clear? mx2 plus nx1 divided by m plus n. In this case, what will do? X equal to 2 into this part. Which part? x2 plus x3 by 2. Okay? mx2 plus nx1. nx1 means 1 into mx2 plus nx1. 1 into x1. Clear? Divided by m plus n. मतलब 2 plus 1. m plus n, 2 plus 1, 2m, that is equal to m2 mx2 plus nx1, mx2 plus nx1, mx2 plus nx1. पूरा नाम आप हम याद रखें. 2 into x coordinate, 1 into x coordinate. Clear? So finally 2 cancel. The numerator will come x1 plus x2 plus x3 by 3. Now the coordinate of this one, x1 plus x2 plus x3 by 3. Similarly, exactly same procedure, same formula. So y coordinate you can get, this is equal to y1 plus y2 plus y3 by 3. Clear? Okay, this is your centroid formula. So centroid formula you can find out by using section formula and midpoint formula. Midpoint formula you can find out by using section formula. So section formula you can find out by using distance formula. So finally distance formula is the main part. So distance formula, section formula, midpoint formula and centroid formula. So this is your all about your coordinate geometry. तो सब सरीगला 1 सेकंड सब तो फॉर्मूला at टाइम लिखि देबी तापर तमे नोट करिवो राइट. देखो फॉलो आरे अटेंड दियो बड़ी बोर्ड लागुची बोर्ड देखा जाय ठीक से. ओके ताले हम देखो हम सब तो जो पढले मु एकटा at a टाइम केम लिखियो चेष्टा कर तमे संगे संगे लिखियो मन लिखियो. ओके देखो डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला कोन AB is equal to what? x2 minus x1 रो होल स्क्वायर स्क्वायर रूट plus y2 minus y1 whole square, y2 minus y1, sorry, this is equal to y1, y2 minus y1 whole square root. Okay, this is AB. Then section formula, x is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n, and y is equal to my2 plus ny1 divided by m plus n. ये गोटे कथा, ये सही कथा जो कथा कि सीटा x and y, x2 y2, this is x1 y1, this is m and n. यहाँ पाए this is line segment, this is line segment A and this is B, this is x1 y1, this is x2 y2. Then first formula गला, then second formula गला, then third formula. Then x is equal to what? x1 plus x2 by 2, y is equal to y1 plus y2 by 2. This is your what? Midpoint formula. Midpoint formula. Like that. Midpoint formula. This is equal to. Then midpoint formula. What I already told. This is equal to same procedure. C. This is equal to this side to this side. This is equal to x and y. And x1, y1 is equal to x2 and y2. Okay? Distance formula, section formula, midpoint formula, centroid formula. Centroid I told already. This is your what? This is the median. This is the median. x1, y1, x2, y2, x3, y3. This is your centroid, and this is equal to O coordinate x1 plus x2 plus x3 y3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Okay, I am coming.
हेला ये डिस्टेंस फॉर्मूला, this is your section formula, this is your midpoint formula, and this one is what? The coordinate of the centroid x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. Proof तो already सरी है ताको देखिए के एक्सरसाइज करियो. ओके आज पे एति सरी गेला तमे निश्चित भाबे वीडियो देखिबो आ जदी जो माने फ्री रे कोचिंग न जाउछ निश्चित ओडिसा क्वेश्चन में आप डाउनलोड करिवो हला. बाकी तमे वीडियो यदि भल लागला ठीक ठाक लागला तो सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो.